normal jumping jack. If someone has knee pain, you're going to follow what I do. Okay, we are going to do 20 times and 3 repetitions. So let's begin round 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स. अगर आपको ज्यादा लगे तो आप 20 का 10 करिए. इफ यू फील इट इज टू मच, यू कैन डू 10 व्हेन वी आर डूइंग 20. Round 2. Let's begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Very good. Keep going. One more round. एक round और करेंगे. Continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Continue to walk. So we'll start working from the calf muscle. Calf muscle is supposed to be the second heart of the body. जो ये calf muscle है, हिंदी में मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, but calf muscle को दूसरा heart कहा जाता है. क्यों? If the calf muscles are stronger, the blood flow reverse to the heart. It is very easier. So आजकल आपने बहुत सुना होगा लोगों को वेरिकोस वेन्स हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है. काफ मसल्स अगर वीक है तो वो ऊपर आने में दिक्कत होता है. सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द काफ मसल्स. वेरी सिंपल काफ रेजेस. पैरों में थोड़ा सा अंतर रखेंगे. स्क्वायर योर लेग्स, स्क्वायर योर फीट. दोनों पैरों को ऐसे पैरेलल रखना है एक दूसरे से. एंड सिंपली लिफ्ट अप लाइक दिस. कम अप and go down. It's not a jerky movement. It's a very smooth and controlled movement. 2, 3, 4. झटके से ऐसे नहीं करना है. ये नहीं कर रहे हम लोग. Control movement. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स. अगर कोई ऐसा है जो बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं किया है बहुत समय से, सो आप अगर ये 20-20 के 3 राउंड करेंगे तो आज दिन में आपको थोड़ा बहुत बॉडी पेन होने की संभावना है. यू माइट गेट अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी पेन ड्यूरिंग द डे इफ यू डू 20 टाइम्स. सो इफ यू डोंट वांट टू डू इट, बी कंफर्टेबल, डू 10 ओनली. ओके, राउंड 2. लेट्स कंटिन्यू. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. If it is painful, you can skip and continue to walk. 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Walk again. Anytime you want to skip, just continue to walk. You cannot stop. Okay. The condition is you have to move however it is. आपको जैसे करना है आप करिए, but आप continuous movement करते रहिए. रुकना मना है. Yes. देखना, योगा देखने से कुछ नहीं होगा. योगा करने से ही कुछ होगा. Yes. So you're not supposed to watch yoga. Okay. Do something.
round 3. Come up, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Continue to walk. Keep walking and we'll tell you what next to do. Okay. The next thing that we're going to do is called as a wall sit. Okay. Now, wall sit कैसे करना है? आप एक दीवार के अगेंस्ट जाके खड़े हो जाएंगे. जिनको घुटने में दर्द है वो ये बिल्कुल नहीं करेंगे. Continue to walk while we are telling you what to do. So wall sit में आप क्या करेंगे? पैरों को दीवार से थोड़ा दूर रखेंगे. Your legs are away from the wall and what you're going to do is sit like this. Now you're making a 90 degree here and your knees are not coming out of your toes. आपके जो घुटने हैं वो उंगलियों से बाहर नहीं आ रहे हैं. ठीक है? Come back up. ये हमें करना है 4 बार 30 seconds hold. 30 seconds we are going to hold this and then for 10 seconds we'll take break and we'll repeat this for 4 times. Now for those who have knee issues, what you're going to do is very good exercise for strengthening your knee. Stand on one leg. That's it. Now, if you feel that you'll not be able to balance, take support of one finger on a wall and stand like this. Okay. Now, continue to walk for a while again. You know, whenever you talk about weight loss, जब भी हम weight loss की बात करते हैं, तो 2 चीजें हैं जो आपको करनी होती है. एक कैलोरीज बर्न करनी होती है, दूसरा मसल स्ट्रॉन्ग करना होता है. क्यों? Whenever you burn calories, it's a direct impact on, you know, the fat. But the indirect way or a better way to burn fat is to improve your muscle strength. Now, while we do this, we are going to improve the muscle strength in our thighs to a very great extent. That will increase your metabolism. That will increase your BMR, the metabolic rate, the calories that you burn without doing anything. That will improve. And this is a great way to lose weight. Yes. So I hope this serves as a motivation for you to do it. 30 seconds, hold, 10 seconds, break, 4 times, repeat. For those who are doing the alternative, we will shift the leg. Okay. So let's get ready. Let's get ready in 3, 2, 1. Round 1. Stay there. Hold it. Hold it. If it is very painful, if it creates joint pain, you're not going to do it. You're going to do the simpler version. Yes? That's 15 seconds more to go. Come on, do not give up. I know it can be a little too much for some of us. If it is too much, you can take a break and continue to walk. But if you can endure it, अगर आप कर सकते हो, बिल्कुल भी अच्छे से करेंगे. Round 1 done. Slowly bring it down, or you can take a break for 10 seconds. And in 4, 3, 2, 1, round 2. Come on. Those who are doing this leg, shift the leg, change the leg. 30 seconds, round 2, hold it, hold it, hold it. 15 seconds for round 2. Come on, be there, be there, be there. Do not give up, do not give up. And 3, 2, 1, relax. Round 2 done, 10 seconds break. And we have 2 more rounds to go. In 3, 2, 1, round 3. Come back up for those who are doing it with the leg, and those who are doing the wall sit, go down. 10 seconds up for round 3. Very good. 15 seconds up. 15 seconds more to go for round 3. Hold it, hold it, hold it. 5, 4, 3, 2, 1. And slowly bring it down. Relax. Round 3 done. 1 more round to go. बस एक round और करना है हमें. In 3, 2, 1. Round 4. Stay there. Stay there. Any alternative is okay. If you're feeling
दिस इज टू मच, यू कैन एनी टाइम शिफ्ट टू दिस वर्जन एज वेल। आपको अगर लग रहा है कि ये टफ है, चैलेंजिंग है, आप इसमें कभी भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स 15 seconds. Stay there, stay there, stay there. In 5, 4, 3, 2, 1, and round 4 done. Continue to walk. You can type it in the comment section. Either you did all the 4 rounds with how many breaks did you take, कर पाए नहीं कर पाए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और आप इसको, ये एक्सरसाइज को याद रखिए। यू रिमेंबर दिस एक्सरसाइज। इफ यू कैन डू दिस एवरी डे एंड ब्रिंग इट टू 2.5 minutes of continuous hold without breaks, you are very healthy. ये एक मेजर कर सकते हैं आप इसको। अगर आप इसको पूरा 2.5 मिनट कर पाए बिना किसी ब्रेक के, तो आप बहुत हेल्दी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आप इसका हर दिन